हरे कृष्णा। सभी भक्तों का साधना टॉक प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हर ग्रेस वक्रेश्वरी माता जी हैं। माता जी को आप सब जानते हैं। लास्ट टाइम माता जी आए थे हमारे शो में, आई थिंक 3rd एपिसोड में, और माता जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई थी, स्पेशली श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को कैसे पढ़ना है, उस बारे में माता जी ने हमें काफी कुछ बताया था। तो आज माता जी हमें बहुत अच्छी बातें बताने वाली है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आ रहा है जो कि 3 सालों में सिर्फ एक बार आता है, और ये भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय, पुरुषोत्तम मास जो बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण को। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम जाने कि पुरुषोत्तम मास को कैसे फॉलो, जो पुरुषोत्तम अधिक मास को कैसे फॉलो करना है, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी भक्ति और आगे बढ़े इसके लिए कैसे फॉलो करना है। तो आज माता जी हमें ये सब बताएंगे, हमें गाइड करेंगे। तो आइए हम सब माता जी को वेलकम करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी। बहुत lot of big thank you to you for coming to our show and sharing with us about Purushottam month. So I'll just introduce you in brief to the audience here, माता जी। मैं आप सबको माता जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। आप लोग सब माता जी को जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। वक्रेश्वरी देवी दासी माता जी इस्कॉन में 1989 से किव, कैपिटल ऑफ यूक्रेन जो है एक सिटी है किव, उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया। और माता जी बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर है, उन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री की है। और माता जी की डिफरेंट सेवाएं हैं, उनमें बहुत सारी सेवा में श्रील प्रभुपाद के बुक से जुड़ी बहुत सारी माता जी ने सेवाएं की हैं। उन्होंने बहुत सारे बुक्स रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, एडिटिंग किया है, प्रूफ रीडिंग किया है, और पब्लिशिंग सेवा भी की है। माता जी मैनेजिंग में सेवा करती है, मैनेजिंग में प्रीचिंग सेवा करती हैं, प्रचार, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा के, जो डिफरेंट वाद्य जो होते हैं उनको बजा के भी भगवान के कीर्तन में सेवा करती हैं। माता जी परम पूज्य जगतगा महाराज के शिष्य हैं, और अभी फिलहाल माता जी मायापुर में है। मायापुर में माता जी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेवाएं कर रहे हैं अभी। हमने बताया था कि माता जी बुक्स, उनके गुरु महाराज के नेतृत्व में बहुत सारे, उन्होंने एक नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद। और माता जी रशियन कम्युनिटी की बहुत सेवा करती है, ट्रांसलेशन करती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज करती है माता दक्षिण माता जी के लिए, ड्रामा, कीर्तन ग्रुप, बहुत कुछ माता जी सेवाएं करती है। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी सीनियर एक वैष्णवी हमारे साथ है, आज हमें वो पुरुषोत्तम मास के बारे में बताएंगे। आप लोग पूरा शो देखिएगा अंत तक, और आपके प्रश्न आप माता जी को पूछ सकते हैं लाइव चैट पे, कि आपको पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न हो आप उनको माता जी से पूछ सकते हैं। आइए हम सब माता जी का फिर से एक बार स्वागत करें 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी फॉर वंस अगेन। So Mataji, last time we discussed with us, and it was very transparently funny incident of how you joined Krishna consciousness. You're coming to ISKCON, so I will not ask you that today, but I still remember that. So Mataji, can you please tell us the story behind Purushottam month? Give me the curtain. Yes, Mata. Oh, I'll answer the question, Mataji. Just a minute, please. माता जी, मैंने प्रश्न पहले माता जी को मैंने धन्यवाद कहा। लास्ट जब उनका जो पहला जो इंटरव्यू था हमारे साथ, उन्होंने उस समय बहुत ही आनंद देने वाले जो अपने इंसिडेंट शेयर किए थे, उन्होंने इस्कॉन कैसे ज्वाइन किया और वो इस्कॉन में फर्स्ट कैसे आए थे। बहुत ही हास्यास्पद था, वो बहुत ही फनी था इंसिडेंट। बहुत आनंद मिला सब भक्तों को सुन के उनके बारे में, उनकी जो स्टोरी के बारे में। तो आज हम माता जी से ये प्रश्न करेंगे कि पुरुषोत्तम जो मास है उसकी स्टोरी, उसके बिहाइंड जो कहानी है पुरुषोत्तम मास की, वो क्या है। धन्यवाद। Yes, Mataji, please continue. First of all, I would like to mention that following Purushottam is one of the most favorite vratas of my Guru Dev, Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. Guru Maharaj likes Purushottam so much. So by his mercy, actually, we got to know about Purushottam, and we have been following Purushottam since, literally speaking, time immemorial. Since we came to Mayapur, we got to know about Purushottam, so we follow all the rules and regulations, most of them, and know the glory, why we do it. So today we will explore why we are doing what we are doing for Purushottam and why it's so important. I'll just translate, Mataji, so they would know.
तो माता जी कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, माता जी कह रहे हैं कि माता जी के गुरुदेव परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, उनके कृपा से माता जी पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो जान पाए। और माता जी जब से मायापुर में आए तब से माता जी बहुत मतलब कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से पुरुषोत्तम मास को जो है व्रत को पालन करें, और उसमें उनको बहुत आनंद मिलता है। तो माता जी कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास है बहुत ही महान एक मास है, एक महान एक महीना है भक्ति करने के लिए, और उनके गुरुदेव की कृपा से वो अच्छे से कर पा रहे हैं मायापुर धाम आने के बाद। First of all, the story behind Purushottam Mass, it's like scattered in different Puranas, but for us, most essential that there's different passages from Padma Purana and from Skanda Purana. So we take these two sources as main structure of our understanding of Purushottam Mass. So whatever they contain about Purushottam, that we will explore now. माता जी कह रहे हैं कि स्कंद बहुत सारे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के बारे में वर्णन किया गया है, बहुत सारे शास्त्रों में इनका वर्णना है। विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास की वर्णना की गई है। सो माता जी अभी जो भी कहेंगे इस आज के शो में, ज्यादातर स्कंद पुराण और पद्म पुराण से लिया गया जो नॉलेज है वही माता जी हमें बताएंगे। Yeah, and this story has so many ways, and in the current of the story, it's endowed with so many different details, like how it starts from Narada Muni coming to the ashram of Naranarayana Rishi in Badarikashram, and Naranarayana Rishi asking what will be the best for all the people who are so degraded now because Kali Yuga is upcoming. What would be the best way for them to be uplifted? By which means can you please tell us? And then Naranarayana Rishi was very pleased with the question of Narada, and he is narrating the story of Suta Goswami coming to the sages of Naimisharanya, and how the sages of Misharanya are asking Suta Goswami to give the perfect story about Krishna so that everyone who hears it become perfect. तो माता जी कह रहे हैं कि नारद मुनि एक बार नर नारायण ऋषि को उन्होंने पूछा कि क्या कलियुग के नारद मुनि क्योंकि बहुत ही कृपामय है, वैष्णव है, उनको चिंता थी कलियुग के लोगों के बारे में कि किस तरह से कलियुग के लोग कितनी घोर समस्या में रहेंगे, कलियुग के लोग, कलियुग इतना घोर युग है, तो उस समय किस तरह से उनको कृपा मिलेगी, किस तरह से उनका जीवन सार्थक होगा। तो उस समय ये एक विश्लेषण किया गया था कि जिस तरह से सुता गोस्वामी ने जो सुता गोस्वामी के ने जो नैमिषारण्य में जो संतों को जो एक उपदेश दिया था, उन्होंने पूछा था कि आप हमें वो स्टोरी बताइए, वो कहानी बताइए जो कि बेस्ट हो, जिससे सबका कलियुग के लोगों का फायदा हो। इसी तरह से नारद मुनि ने प्रश्न किया था नर नारायण ऋषि को कलियुग के लोगों के भले के लिए। And then Suta Goswami said that, okay, after hearing this question from Narada, Lord Narayana began to speak, and from his moon-like lotus mouth came the nectar of this whole story of Purushottam Mass, and he told Narada. तो नारद मुनि ने फिर भगवान श्री कृष्ण, माता जी कृष्णा आंसर्ड और नॉट नारायण आंसर्ड हिज क्वेश्चन, नारद मुनि नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि, फिर नर नारायण ऋषि ने फिर उनका उत्तर दिया, उनके जो मुख कमल से उन्होंने इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया, ये जो पुरुषोत्तम मास के बारे में। Oh Narada, I will tell you something which was previously explained by Lord Krishna himself. So Krishna entering the scene. Now he himself, not Narada, not Suta Goswami, not everyone else, but Krishna personally, because it's his month, the Purushottam. It's named after Krishna. So Krishna is the first person from whom we have to hear about the glory of the Purushottam. So Krishna entering the scene now.
ओके, सो नर नारायण ऋषि को जब उन्होंने नारद जी ने प्रश्न किया था, तो फिर अब नारद जी, ये जो एक स्टोरी हम सुन रहे हैं कि नारद जी नर नारायण ऋषि को प्रश्न कर रहे हैं। अब नर नारायण ऋषि उनको एक स्टोरी बोल रहे हैं नारद जी को, जिसमें अभी श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो अभी जो हम सुनेंगे वो श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है पुरुषोत्तम मास की महिमा, क्योंकि जब भगवान बोलेंगे तो उसकी महिमा और भी महिमा मंडित हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं नर नारायण ऋषि जो स्टोरी बोल रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम मास के बारे में जो बोल रहे थे, अभी माता जी जो बोलेंगे वो नर नारायण ऋषि, वो कृष्ण भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है पुरुषोत्तम मास के बारे में। Yeah, sorry, we have some technical, just one Okay. minute. We have some technical. Okay, it came back. Can you hear me? Yes, Mataji, I can hear you. I can see the background also. I think you are not there in front. Yeah. Just 1 second. आप लोग प्लीज थोड़ा सा रुकिए, मतलब थोड़ा सा वेट कीजिए, माता जी पे आ रहे तो टेक्निकल डिफिकल्टी है। मैं इसलिए क्षमा चाहती हूँ आपसे, आप लोग प्लीज थोड़ा रुकिए, माता जी भी आ रहे हैं। यस माता जी, प्लीज। यस। Okay. All right. Yeah. Yes, it's perfect. So Narada. That's Narayana Rishi tells. Lord Krishna starts speaking the story of the month of Purushottam. Once Dharmaraja Yudhishthira, that Krishna speaks already, Yes. lost everything. His empire, his palace, and even his chest by Draupadi to Duryodhana in a gambling match. At that time, Draupadi was insulted by Dushasana, we know all this, in front of all the whole royal assembly. But when Dushasana has tried to strip Draupadi naked, she was saved from such dangerous situation by Lord Krishna himself. And after this incident, Yudhishthira Maharaj, along with his brothers and good wife, left his kingdom and lived Kamyavan, Vrindavan. भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अभी कि जब एक बार ऐसा हुआ, एक समय की बात है जब पंच पांडव जो युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार चुके थे। आप सबको कहानी पता है कि जब छल से उन्होंने जो कुरु कौरवास ने पांडवास को हरा दिया था, और ऐसा भयंकर समय आया था कि उन्होंने अपना राज्य अपनी प्रिय स्त्री द्रौपदी जी को भी उन्होंने हार गए थे। और उस समय दुशासन ने द्रौपदी जी के सारे वस्त्रहरण करने की कोशिश की और उनको ये बेइज्जती करने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने समय पे आके, जब द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को हे वो गोविंद कह के, उस टाइम जब भगवान श्री कृष्ण ने आके उनकी लाज रखी, तो उस समय का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और फिर जब ये सब वो पूरा हार चुके थे, तब युधिष्ठिर महाराज जो अपने भाइयों को लेकर सबको लेकर काम्यवन चले गए थे। काम्यवन वृंदावन में है। यस माता जी। And then Krishna visited Pandavas in Kamyavan. So all the Pandavas, including Draupadi, were very happy to see the Lord. And they forgot all the painful condition of living there immediately. And they felt enriched with a new life just by taking Krishna's darshan. And they paid their obeisances to the lotus feet of the Lord. And seeing the miserable condition of the Pandavas, Krishna became very upset. And at the same time, he became very angry towards Duryodhana, because it was Duryodhana who actually was a reason for this. What he saw now, the condition of the Pandavas. And it appeared that the Lord was going to destroy the whole universe with his anger. And so the Pandavas very fearful. Yeah. Yes. माता जी, तो जब सब पांडवस काम्यवन चले गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवस से मिलने काम्यवन आए थे एक समय। तो जब उन्होंने आके पांडवस की इतनी दुर्दशा देखी कि उनके पास कुछ भी नहीं है, इतने कष्ट में है,
तो भगवान उनको देख के दो चीजें हुई, पांडवास को तो बहुत आनंद आया, अपने दुख कष्ट भगवान को देख के सब भूल गया, बहुत आनंद में आ गए। लेकिन भगवान कृष्ण को पांडवास, उनके जो प्रिय भक्त है, उनको देख के इतना क्रोध आया कि वो एकदम बहुत क्रोधित हो गए। उनको पहले तो बहुत दुख हुआ कि अरे आप लोग इतने दुख में हो, और फिर उनको बहुत क्रोध आया कि क्यों क्रोध आया, क्योंकि दुर्योधन की वजह से, आज दुर्योधन के ऊपर क्रोध आया क्योंकि दुर्योधन की वजह से उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा था पांडवास को। और पांडवास बहुत भयभीत हो गए कि भगवान का इतना क्रोध लग रहा था कि तीनों जो लोग हैं उनको सब नष्ट हो जाएंगे, इतना भगवान का क्रोध आया था दुर्योधन के ऊपर। यस माता। And then they began to pray to the Lord in a very humble way, and listening to their perfect prayers, especially of Arjuna, the Lord composed himself, and he said, Arjuna, being very pleased with all of you Pandavas and being controlled by your devotion and friendship, I will now tell you about the wonderful history of Purushottam. That's the beginning. फिर भगवान को जब सबने, उन्होंने प्रार्थनाएं की, पांडवा सबने मिलकर भगवान को बहुत अच्छे से विनम्र होकर प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना से भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए, आनंद खुश हुए। और स्पेशली जो विशेषकर अर्जुन की जो प्रार्थनाएं थी उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी पुरुषोत्तम मास के बारे में बताऊंगा। Once, by arrangement of providence, an extra month came to this world. So there was a point at the time when एक बार विधि के ओके, एक बार विधि के विधान से ऐसा हुआ कि एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त मंथ, मास जो है वो आ गया। माता जी, आई एम डूइंग शॉर्ट ट्रांसलेशन so that the audience don't get bored, you know. If I hear, I can understand, but they'll wait when I translate. So I am taking shorter pieces of translation from you. I mean, that is the reason I'm interrupting you. I apologize for that. And everyone took this month to be most inauspicious. It's called karmas or malamas, and even so, it's the stool-like month. Two-leg month. Yeah. Stool. What did you say the last? So Mataji, please. Stool-like. Stool. Malamas means Stool-like. stool Oh, month. malamas. Okay, okay. तो फिर सब लोग उस मास को इतना, क्योंकि उस मास में कुछ ऐसा, कुछ फेस्टिवल कुछ नहीं था, तो उस मास को सब लोग इतना घृणा करने लगे, और इतना कि जैसे जो मल मास, जो मल होता है, जो मल तो बहुत ही अछूत होता है, वो सबको उस मास से मल मास कहने लगे। इतना मतलब इतना उनको उस मास को सब घृणा करते थे, मल मास कहने लगे उस मास को। And everyone rejected it because untouchable. Everyone considered it to be untouchable. Therefore, this mass was totally unprotected and blasphemed by the people and rejected by everyone as an totally improper time for any religious and auspicious activities. So nobody wanted to deal with this month. So everyone stopped the activity in this month, actually. And being so rejected by all human beings, and constantly hearing all this blasphemy, bad words, the personality of this extra month became very sad. She came to Vaikuntha and to explain to Lord Narayana about her pitiful condition. And तो माता जी कह रहे हैं कि जब जैसे इस मास को सब मल मास कहने लगे, बोलते थे कि ये एकदम अछूत मास है, ये बिल्कुल उसको, उस मास को बहिष्कृत कर दिया कि ये मास में तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता इस मास में। बहुत ही तुच्छ मान समझ के इसको बहुत उन्होंने अपमान किया, और उसे कोई भी नहीं, उस मास को कोई भी नहीं अपनाता था। तो उनको बहुत, अभी तो हमारा, तो उनको बहुत वो जो मास की जो वैदिक सिस्टम में हर एक जो चीज, जैसे महीने का भी पर्सनल फॉर्म है, तो जो इस मास में जो देवी है वो एक बार बहुत दुखी हो गया। अगर कोई भी किसी को कोई अपनाएगा नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देने वाला नहीं था, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं था इस मास को, सबने उनको तुच्छ के तिरस्कार किया था। तो बहुत दुखी होके वो वैकुंठा गई, वो जो माता जी हैं, जो पुरुषोत्तम मास की देवी हैं, वो वैकुंठा गई। And she fell down at the lotus feet of Lord Narayana, and in like very prayerful mood, she started praying to him, like
and all these tears of falling profusely from her eyes. And she told him, I have come to you because I am so helpless. I have been rejected and blasphemed by all people. Please protect me. Please show me your mercy. And then Lord Narayana became so compassionate to her. And he told immediately that I will give you all protection. But for this, we have to go to Krishna to Golok Vrindavan. So I will present your case. And Lord Krishna, that's the person who will give you full protection. So they went to Goloka. Narayana took her. This, both of them went. Yeah, and both of them, they went to Goloka to see Lord Krishna. हरि बोल. तो क्या हुआ, जो मुझसे जो पुरुषोत्तम माता जो देवी है, जैसे हमने माता जी ने पहले कहा कि वो बहुत दुखी हो गई और वैकुंठा गई. तो वैकुंठा जाके उन्होंने बहुत विनम्र मन से, बहुत रोते रोते उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान नारायण, मुझे सब तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं अपना रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? आपके पास मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, आप कृपा मुझ पे कृपा करें. तब भगवान नारायण ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा, तुमको सब प्रोटेक्शन दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भगवान कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, कि सबसे अच्छे प्रोटेक्शन तुमको भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं. तो फिर नारायण भगवान उनको, जो पुरुषोत्तम मास की देवी है, उनको लेके वो भगवान के पास गोलोक वृंदावन में चले गए, भगवान कृष्ण के पास. And when they came there, when they arrived, immediately Shri Krishna asked, why is she crying? She's in Goloka Vrindavan. Why is she crying? The place where there should not be any tears, because there is no reason for these tears. And Sutta Goswami continued. Then Krishna, upon hearing her pitiful citation from Lord Narayana, he spoke as follows. O Vishnu, you have done a very great deed by bringing these extra months to me. You will become even more famous for performing this act. Hari bol. You have accepted these other commands, like additional months, and I will also accept here. Why he mentions that she is additional months? Because every 3 years, 1 month, according to lunar calendar, forms, like out of all this time, during these 3 years, 1 extra month comes in the picture, and this is Purushottam. Therefore, it's called Adhika months. It's something additional, coming once in 3 years. 3 years. तो जब कृष्णा के पास पुरुषोत्तम मंथ की जो देवी है, पुरुषोत्तम की देवी वो, और जब नारायण भगवान गए, तो माता जी रोते रोते गई, आंखों में आंसू लेके गई. तो कृष्ण ने कहा, हे नारायण, ये तो वैकुंठ में है, तो वैकुंठ में तो कोई रोता नहीं, तो ये देवी रो क्यों रहे हैं? यहाँ पर तो रोने का कोई कारण नहीं है, कि तो क्यों रो रहे हैं? तब नारायण भगवान ने उनको सब भगवान श्री कृष्ण को सारी कहानी बताई कि क्यों माता जी रो रहे हैं. तब कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप इनको यहाँ पे गोलोक वृंदावन में लेके आए हैं, और इसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा आपका यश, क्योंकि आपने ये काम किया आज कि पुरुषोत्तम मास की जो देवी है उनको आप मेरे पास गोलोक वृंदावन में लेके आए. इसके लिए आपके यश और भी फैलेगा, आपकी कीर्ति और भी फैलेगी, क्योंकि आपने बहुत महान काम किया है. और फिर कृष्ण ने बताया कि क्यों ये अधिक मास होता है. ये अधिक मास होने की वजह है कि हर 3 साल में, अगर हम लूनर कैलेंडर, इसको बोलते हैं चंद्रमा के हिसाब से जो कैलेंडर बनता है, उसको मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लूनर कैलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में. चंद्रमा के हिसाब से जो कैलेंडर बनता है, उसमें हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा मंथ आता है, कुछ दिन बच के एक्स्ट्रा मंथ आता है, कुछ डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए कुछ होता है. मुझे तो डिटेल में माता जी ने भी बताया नहीं इस बारे में, लेकिन उसके लिए वो अधिक मास होता है, जो कि पुरुषोत्तम मास होता है. कृष्णा ने ये बताया, कारण बताया कि अधिक मास क्यों होता है. यस माता जी. Yeah, and then
Krishna told to Vishnu, because you accepted here, I will also accept here. And then he gives benediction to these months, the way how he accepts the months. I shall make these 4 extra months first, just like me, in qualities, fame, opulence, realization, success, and in giving benediction to everyone, all the devotees. And second, these months will become equally potent as me. Hari bol. Yeah. And then third, I am bestowing all my divine qualities upon these abused months. And then fourth, named after me, these months will become Purushottam. The Lord named these months after himself. And then, So, oh, yeah. so you said first is that Krishna said that he gives this month will be equaling to Krishna in name, qualities, and potency, benedictions, Opulence and opulence realization also, and and success. realization, success. Okay, Yeah. let me say this much, else I'll forget all the points. Because I want to tell everything to them so they don't miss out. तो कृष्ण ने बहुत सारी चीजें बताई किस तरह से पुरुषोत्तम मास की जो देवी है उनको बहुत कृपा मिली. पहला पॉइंट माता जी ने बताया कि जो अधिक मास है, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो मंथ है इसमें सक्सेस, ये जो मास है इसके जो गुण होंगे, जो उसके जो आध्यात्मिक जो जो शक्ति होगी, जो आशीर्वाद देने की क्षमता होगी और किसी को भी सफलता देने की जो शक्ति होगी वो भगवान से अभिन्न होगी, भगवान जितनी ही होगी. दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान ने अपना नाम अपना नाम उन्होंने, उनके जो गुण है, जो इस मंथ के जो गुण है वो भगवान के गुण जितने ही होंगे, कम नहीं होंगे कुछ भी, भगवान के इतने ही गुण होंगे. उसमें ये भी था कि उनकी जो ऑपुलेंस, जो उनकी जो वैभव है, इस मंथ का जो वैभव है वो भगवान जितना ही होगा, इतना उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की देवी को. और तीसरा कि उस मास को उन्होंने अपना नाम दिया, अपना नाम पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण का नाम हमें पता है. पुरुषोत्तम मास का जो नाम है उन्होंने अपना नाम उस मंथ को, जितनी ज्यादा कृपा उन्होंने इस मंथ पे की. माता जी, I covered till third point. You said that Krishna gave his name to the month, Purushottam month. That was the third point. I covered that till that. And they actually it's fifth one already, but okay, fourth one. I myself will become the husband and director of this Purushottam month. So Krishna became the husband of this poor girl, the mistress of this Purushottam month. And then fifth one, and being equal to me, this month will be the master of all other months. And now this month will become as worshipable as I am myself. Everyone, I will pay their obeisances to her. Everyone will worship here. And the sixth one, this month is as powerful as me to give any type of benediction to its observer. So whoever observes this month will be benedicted by the Lord himself through this month. So this month gives equal benediction with the Lord himself, the observer. And so the worship of this month. Yeah, this is six. तो फिर इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं उनको अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं उनका हस्बैंड बनूंगा. तो कितना बड़ा आशीर्वाद है कि वो पहले वो जो अधिक मास की देवी कहते कि मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरा कोई प्रोटेक्टर नहीं है, भगवान कृष्ण स्वयं उनके हस्बैंड बन गए, उनको अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया. और फिर उन्होंने कहा कि जितना आशीर्वाद मैं दे पाऊंगा, जितना आशीर्वाद देने की क्षमता मुझ में है, उतना ही उनको भी उतनी ही कृपा, उनको भी उतना ही पावर होगा आशीर्वाद देने का, आध्यात्मिक आशीर्वाद देने का उसको उतना ही कृपा होगा. और फिर जिस मास को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, अधिक मास, मल मास बोल के, ये जो मंथ है अधिक मास, ये अभी बाकी सब मंथ, बाकी सब जो मास है उन सब का मास्टर, उन सबकी लीडर बन जाएगी, सबसे हाई लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबकी जो देवी है वो ये बनेंगी, सब मास की देवी अभी पुरुषोत्तम मास की देवी होंगी. यस माता जी. And then he tells
The worshipper of this month will be able to burn all his past sinful reactions to ashes. Hari Bol. That's the first one. And then after enjoying a blissful life in the material realm, he will return back to Golok Vrindavan. So three things are covered here. First, there will be no sins. They will be Yes. burned by the reactions of performing this month. And then he gets like a byproduct, the performer. What is this byproduct? Enjoying a blissful life in material sense. Although we are not supposed to do anything like kind of material things during this month, but devotional service itself, when it's performed during this month, gives this byproduct of blissful material life. It also will be there. Krishna will list now. So this is, it comes on its own in the course of performing the devotional service during this month. It's not like a special kind of activity we're supposed to. No, it's just coming on its own, like a bike. And third thing, after enjoying the life the way he wants it, because Krishna gives his benediction, he returns to Golok Vrindavan. That's the main thing. Oh, Hari, that's the most important the devotees want. Very nice. So this is the way Krishna is proving his Patita Pavan. Someone who was so much rejected by everybody, then Krishna blessed her in such a great exalted way. So माता जी, yes. माता जी कह रहे हैं कि मतलब बहुत सुंदर स्टोरी है और इतना सुंदर बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इस मास का व्रत करेगा, जो इस मास में भक्ति करेगा, पहला तो उनके जितने भी पाप है, जितने जन्मों के जितने भी पाप है, जितने भी पाप है, वो सारे पाप नष्ट जल के भस्म हो जाएंगे, सारे पाप। सेकेंड पॉइंट है कि जो वो चाहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए उन्हें सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, उनकी लाइफ बहुत आनंद से गुजरेगी, उनकी लाइफ में बहुत आनंद रहेगा भौतिक जगत में रहते हुए। और इतना होने के बाद और उसके लिए माता जी कह रहे हैं उसके लिए भौतिक जगत में आनंद में रहने के लिए उन्हें कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुरुषोत्तम मास करने से ही भौतिक जीवन में भी वो आनंद से रह सकते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कि वो सब जीवन के बाद मेरे धाम गोलोक वृंदावन में आ जाएंगे। हरि बोल, कितनी अच्छी बात है। Yes, माता जी। And then Krishna, it's so encouraging, माता जी। Yeah. It's like whole thing. Krishna reveals this to us. It was not known. And then he continues. My Goloka is unattainable to the performance of austerities. Mahatmas engage in pious activities, but not the person who can reach my abode. It's not attainable to people who maintain celibacy. Not for them. Or to those who fast through whole their life. It's also not for them, my Golok. But just by observing Purushottam months and becoming a devotee, one can easily cross over the material ocean of this material world and return back to God. So Krishna mentioned all the performance of different activities which lead to some kind of perfection, but by this means Goloka is not attainable, but by Purushottam months, by observing Purushottam, it's easily obtainable. It's like the special gift. Special mercy. तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जो गोलोक धाम है उसे प्राप्त करना, उसमें जाना या उसको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। जो योगी है, जो योग सिद्धि के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत योग साधना करते हैं, उनके लिए मेरा गोलोक धाम में नहीं जा सकते। जो बहुत सारी तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, उनके लिए भी गोलोक धाम के लिए सुलभ नहीं है। जो लोग बहुत सारा जीवन अगर उपवास करेंगे ना, फिर भी गोलोक वृंदावन उनके लिए भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब जो पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन करेगा, उनके लिए मेरा गोलोक वृंदावन सुलभ है। तो कितनी अच्छी, कितनी मोटिवेटिंग बात माता जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने जो बोला। इस माता जी। Yeah, and then Krishna, of course, tells about the consequences of not observing the months. It's also very important to
understand for us. He says, an unfortunate, ignorant man who does not perform any japa, extra japa for us, because we perform japa, we do japa, right? So for us should be some extra japa, or of whoever does not give any charity, it's also prescribed to give charity, does not pay respect to Lord Krishna or his devotee, does not behave properly to Brahmanas, make enmity with others, and who blasphemes the Purushottam months will go to hell for an unlimited period. It's also, it should be balanced. Okay, one side Yes, benefit, and the yes. other side the consequences of not observing the month. So we have to also understand Not that. respecting, not observing. Exactly, exactly. And then Shri Krishna continues, how can a person make his life successful unless he performs devotional service in this Purushottam month? He takes it so serious, like his own month, and he's worshipable like Krishna himself. So Krishna Yes, asks this question, how the life can be successful without observance of this Purushottam of month? this month. So कृष्ण ने फिर कहा कि ये जो मास है इसका व्रत करके कितना, हमने जैसे माता जी ने पहले कहा कि कितना ज्यादा लाभकारी है ये मास में व्रत करना, कितना ज्यादा आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। और इवन अगर आप मटेरियल, अगर कोई भौतिक इच्छा है तो उनके लिए भी लाभदायक। तो भगवान कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में कि जिनकी भौतिक इच्छा है वो भी पूरी हो जाएंगी। अब भगवान कह रहे हैं कि नहीं का जो लोग जो मूर्ख लोग, जो अज्ञानी लोग इस मास में भक्ति नहीं करेंगे, भक्तिमय सेवा नहीं करेंगे भगवान की, और जो इस मास में पाप कर्म करेंगे, किसी का निंदा करेंगे, झूठ बोलेंगे, या कोई ऐसे कोई व्यभिचारी कुछ करेंगे जो कि भक्ति के अगेंस्ट है, जो कि भक्ति के लिए अगेंस्ट है, ऐसा कुछ करेंगे, तो उनको फिर जो पाप कर्म करेंगे, इस मास की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इस मास जितना उन्होंने कृपा की उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और ऐसा से अगर उसको ब्लास्फेमी करेंगे इस मास को, तो उन्हें नरक में रहना पड़ेगा अनलिमिटेड टाइम तक, मतलब नरक में ही रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति, भगवान फिर और भी कहते हैं कृष्ण की, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास को नहीं ऑब्जर्व कर रहा, उसमें अगर नहीं लाभ उठा रहा, वो फिर कैसे अपने जीवन में सफलता पा सकता है? उनका जीवन का क्या गति, अगर इतना कुछ होने का, अगर वो, अगर कोई अगर ये नाश नहीं करेगा, उनका क्या गति हो सकता है, उनका क्या सफलता हो सकता है? फिर नहीं हो सकता। यस माता जी। And then Krishna gives like a very brief way to observe the months, right? Worshiping me, Shri Krishna, by chanting my holy name. So that's the first rule. Harinam. First. Second, study Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Second. Third, giving charity. Giving charity. Fourth, offering Gilan. It's very simple. He gives like, it's very basics. Now we will go like deeper in this matter, but that's what Krishna speaks himself about the way to observe the month. So first he said, worship me. Second, read Bhagavatam, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Third, give in charity. And fourth was offer Ghilam. Offer Gilam, but first Gilam. By chanting, like by chanting my name. हरिनाम संकीर्तन। Yeah. So भगवान कृष्ण ने फिर उनको बताया, बहुत संक्षेप में बताया कि इस मंत्र को हम कैसे पालन करेंगे, पुरुषोत्तम व्रत को। सबसे मुख्य जो उन्होंने बताया, जो करणीय है, वो है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है उनके हरिनाम के द्वारा। हरिनाम जप करके उनकी पूजा होगी, मतलब भगवान की पूजा करनी, हमें अच्छे से अपना जप करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें जप करना है भगवान के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि second was japa. Second point I forgot. Second point was to give. Study Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. हाँ, तो फिर द्वितीय उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतम और श्री भगवत गीता का पठन करना, अध्ययन करना है अच्छे से, एकदम मन लगा के। तृतीय है कि हमें दान देना है, कृष्ण भावनामृत में दान देना है। और चौथा है कि भगवान को रोज घी का दिया अर्पण करना है, रोज। ये 4 पॉइंट भगवान ने बताए। तो पहला वापस रिपीट कर रही हूँ, पहला भगवान की पूजा करनी है हरिनाम के द्वारा, अच्छे से जप करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी है, नाम प्रभु को। सेकेंड पॉइंट है कि हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन रोज करना है, अच्छे से अध्ययन करना है मन लगाकर। तृतीय जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमें दान देना है, कृष्ण भावनामृत में डोनेशन वगैरह कर सकते हैं हम लोग। और चौथा है
कि हम रोज भगवान को एक घी का दिया अर्पण करें. Yes, Yeah. Mataji. I repeated that for emphasis. Yeah, it's beautiful. It's just Yes. 4 points, literally speaking, how to observe. And then, of course, the acharyas explained it more and more details, like to add to observance. It's according to the capacity of the observer. But now Krishna continues, and he speaks to Arjuna. O lion among men, can you now understand the reason why you Pandavas are suffering? You remember Oh. Krishna came to Kamyavan to see Pandavas who Yes, are yes, suffering yes. from snail. You did not acknowledge or honor the presence of Purushottam months. So they didn't observe Okay, one. Pandavas, which has been recently finished. So Oh. Purushottam months finished, but they didn't do anything about it. And Krishna speaks further. That month, which is most dear to Vrindavan Chandra, means me. Mm-hmm. It's not even me, but Vrindavan Chandra. They're in Vrindavan now. So you're supposed Yes. to do this. Why you're suffering now? Because you didn't observe the months. But you Pandavas were in the forest and did not worship Purushottama month. So now you are suffering. So all the condition of poor life there in the forest, they could have enjoyed there, but they didn't because they didn't follow the Purushottam month. Musalman. And it says, Vyasadeva gave you only ritualistic principles. He didn't give you the observance of the month. Therefore, you didn't perform the devotional service during this month, and because of this, you are suffering. And then he gives even more detailed explanation of this suffering condition of the Pandavas. And he comes to the story of Draupadi and how she insulted the Purushottam months in her previous life. It's so intricate, and it becomes like more and more juicy, like how the Pandavas came to their current condition was to bear consequences of all this. And Okay, I'll just Krishna, translate, Mataji. I'll okay. just translate. तो फिर हम अभी भगवान कृष्ण, अभी जैसे हमने पहले माता जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण, ये स्टोरी जो भगवान कृष्ण ने बताई अधिक मास की, वो भगवान युधिष्ठिर महाराज को और पांडवास को बता रहे थे जब पांडवास काम्यवन में थे और कृष्णा उनसे मिलने आए थे. तो अभी वापस अभी वहां कृष्णा, जो स्टोरी खत्म हो गई पुरुषोत्तम मास की, तो कृष्णा बोल रहे हैं कि देखो आप लोग इसलिए इतना सफर कर रहे, इतना दुख भोग रहे क्योंकि आपने जो अभी जो पुरुषोत्तम मास गया उसमें आपने कुछ उसका पालन नहीं किया अच्छे से. पुरुषोत्तम मास का आप इग्नोर कर लिया, आपको पता नहीं था, और हो सकता है कि व्यासदेव जी ने आपको इस बारे में नहीं बताया था, तो इसलिए आपने अच्छे से उसका पालन नहीं किया, पूरा तरह से इग्नोर हो गया मास, इसीलिए आप इतना दुख भोग रहे हैं. आपके दुख का कारण है कि आपने पुरुषोत्तम मास अच्छे से फॉलो नहीं किया था, उसका पालन नहीं किया था. जैसे भगवान ने पहले कहा था कि जो पालन नहीं करेंगे उनको इतना दुख भोगना पड़ेगा. तो बोल रहे हैं कि पांडवास को बोल रहे हैं कि आपने अभी गया जो उसको पालन नहीं किया, आपको दुख भोगना पड़ रहा है. फिर उन्होंने ये भी कहा, अभी माता जी बताएंगे कि एक और कारण उन्होंने बताया. एक तो उन्होंने बताया कि पांडवास ने नहीं फॉलो किया था, और दूसरा कारण है कि द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी को इतना दुख क्यों हो रहा है, वो भी अभी माता जी स्टोरी बताएंगे कि कृष्ण ने क्या कहा था कि द्रौपदी को इतना दुख क्यों भोगना पड़ रहा है. Yes, Yeah, Mataji. and he continues, like just in few sentences, literally speaking, like the whole story of Draupadi's previous life and how she insulted, like in her previous life, she was a Brahmani. She was a daughter of Brahmana sages, and her name was Medavi. So this Medavi. Her name was her name Medavi. was Medavi. Yeah, Medavi. Yeah. Okay, okay, thank you. Yes. And her mother died when she was a small child, and she was under the care of her father. So day by day, she grew to full-bloom youth, and she was very beautiful. But her father was not interested in arranging her marriage. So seeing her like other girlfriends with their husbands and young children, she passed her days in a very miserable way.
So meantime, even her father passed away from this material world, so girl became even more miserable. And fortunately, the great sage Durvasa Muni, who happened to be Mataji, I'm not able to hear you. Hare Krishna. yeah. I'm not able to. Mataji, I'm not able to hear you. There's some disturbance, I think. Now it's better. Now it's Yeah, better. yes, Mataji, yes. So I heard till you said that she was not getting married. Her father was not interested in getting her married, and then you said Yes. Durvasa Muni came. I think you said that. That much I could hear. Yeah, father passed away, and then Oh. yeah, after this, so she became even more miserable. So her last shelter in this world just disappeared. Mm-hmm. There was no Okay. shelter for her in this Hmm. world. And then Okay. Durvasa Muni came to her house, like after he heard that father passed away. So he came there, and she offered him flowers, fruits, and welcomed him. And he was very happy with her reception. And she then began lamenting and crying Hmm. before him. And he told him, she told him whole story, what's happened with her, and that she doesn't have any shelter and Hmm. lost all her relatives, and her parents passed away, no mother, no father. And she asked him what to do, Okay, I'll how. translate now. Okay. So माता जी बोल रहे हैं कि द्रौपदी माता जी पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ब्राह्मण पुत्री थी। वो बहुत सुंदर थी, छोटी सी बच्ची थी, अपने पिता के साथ रहती थी। और जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, पिता के साथ रहती थी, बहुत सुंदर एकदम युवती हो गई, बहुत सुंदरी हो गई। लेकिन उनके एक दुख की बात ये थी कि उनके पिता उनका विवाह करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उनके विवाह के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपनी बेटी के विवाह के, द्रौपदी जी के विवाह। उनका नाम मेधावी था, तो मेधावी माता जी के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे कि उनका विवाह कैसे कराएं, क्या कराएं, पिता सोचते हैं। तो इसका उनको बहुत दुख था। तो वो सब लड़कियों की शादी हुई, उनका विवाह, सबके विवाह हो गया, उनका विवाह नहीं हो रहा था, वो थोड़ा दुखी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन उनके पिता का भी देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हो गया तब उनको देखने के लिए कोई नहीं था। तो ना पिता माँ थी, ना पिता थे, ना कोई इनके आत्मीय स्वजन थे, कोई रिलेटिव भी नहीं थे, उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, कोई, तो अकेली रह गई बिल्कुल। उनकी जो कुटी में अकेली रह गई मदर मेधावी माता जी, और युवती थी। तो उस तरह से वो बहुत दुखी थी, कोई भी नहीं था, अकेले अकेले जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दुर्वासा मुनि उनकी कुटिया उनके वहां पे आए, और उन्हें बहुत अच्छे से दुर्वासा मुनि की सेवा की, उनको फल दिया, उनको अच्छे से प्रसाद दिया, वो बहुत सेवा की उन्होंने। और दुर्वासा मुनि बहुत खुश थे उनकी सेवा से। फिर दुर्वासा मुनि को उन्होंने बोला कि आपको बोलो क्या कर सकते, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं है, मैं ऐसे अकेली रह रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए। तो ऐसा वो बोल रहे थे, मेधावी माता जी दुर्वासा मुनि को बोल रहे थे, अपने जीवन के बारे में बोल रहे थे दुर्वासा मुनि को। यस प्लीज माता जी। And then he told her that very soon Purushottam month will begin, and this sacred month is very dear to Lord Krishna. And just by taking a holy bath, even once in this month, a man or woman can become completely sinless. And this Purushottam month is most glorious than all other months. The glories of all other months is not even equal to 1/16 of the glories of Purushottam month. And 116। 1/16, yeah, 1/16. ओके। And ओके। the merit of a person who takes a holy bath even once in this month is equal to the merit of taking bath in the Ganges for 12,000 years. हरि बोल। One वन Hari, बात। तो yeah. फिर उसके बाद दुर्वासा मुनि को जब उन्होंने अपने दुख के बारे में बताया कि मेरा पिछला विवाह नहीं हुआ, मैं अकेली हूँ, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि बहुत ही शीघ्र ही पुरुषोत्तम मंथ आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पुरुषोत्तम मास की महिमा अगाध है। उन्होंने कहा कि इस मास में जो एक बार भी तीर्थ स्नान या होली स्नान करेंगे, जैसे गंगा स्नान जैसे स्नान करेंगे,
तो उनको बहुत लाभ होता है उसका, और इस मास में भक्ति करने से बहुत फायदा होता है। ये जो मंथ है वो ये जो मास, पुरुषोत्तम मास की जो महिमा इतनी ज्यादा है कि बाकी समस्त मासों को मिला के जो टोटल महिमा होती है, उस महिमा, पुरुषोत्तम मास की महिमा का, इसे पुरुषोत्तम मास की महिमा का एक तरफ रख दिया जाए, उसका 16 भाग का एक भाग भी नहीं होगा सब मासों की महिमा मिलाकर। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी ज्यादा है। और अगर एक बार भी कोई अगर स्नान गंगा होली होली बात मतलब कोई भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं इस महीने में, अगर एक बार भी करते हैं, उसकी महिमा कितनी होती है? 12,000 साल तक गंगा स्नान करने की महिमा एक स्नान, पुरुषोत्तम मास में एक स्नान करने में मिलती है। तो आप अगर 30 दिन गंगा स्नान करें, गंगा जी हमारी निकट ही है, मैक्सिमम लोग कलकत्ता से ही है हमारे ऑडियंस, तो अगर हम रोज स्नान करेंगे तो 12,000 इंटू 30, तीन मतलब if we take bath every day, it's 30 into 12,000 to the math, I think 48,000, 4,80,000 तो अगर हरि बोल तो इतना ज्यादा महिमा है एक सिर्फ स्नान का। अभी तो उन्होंने बाकी तो सिर्फ स्नान का ही बोला, और तो कुछ बोला ही नहीं कि हम जब करेंगे तो क्या होगा। हम अगर भागवतम से भी स्नान की इतनी अगाध महिमा दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी, जैसे मदर मेधावी जो पिछले वर्ष में द्रौपदी थे, उनको बताया। And then he told her, if you will take a holy bath, so he adds to whatever Krishna described, the way how to perform the Purushottam mass. First, he adds holy bath because he already mentions the glory of taking even once of the holy bath there during Purushottam mass. So he adds to the observance of the month this one point, to take bath. It's the best for us also to do it during Purushottam month, even once. It's the best to do it like as many as possible, but we are doing it daily. We are going to Ganges because Ganges is here, right here. So we observe, we taking baths regularly every day. So first, if you take holy bath and then give charity and then chant the holy name of Krishna during this month, then all your miseries will go away. You will attain all kind of perfection and you will get all your desires fulfilled. So please follow my advice and like worship the upcoming Purushottam months very sincerely. That's what दुर्वासा मुनि फिर द्रौपदी मदर मेधावी माता जी को और बोलते हैं कि अगर पहले उन्होंने स्नान के बारे में कहा था, तीर्थ नदी में स्नान करने के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था कि इस मंथ की महिमा इतनी अगाध है, अगर मेधावी माता जी को कहा था कि अगर आप स्नान करेंगे रोज गंगा या कोई पवित्र नदी में स्नान करेंगे, दूसरा अगर दान देंगे, तीसरा भगवान के नाम का जप करेंगे, तो जो भी करेगा उनके सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे, उनको आनंद की प्राप्ति होगी, सारे दुख कष्ट उनके नष्ट हो जाएंगे। इतना महान ये मास है पुरुषोत्तम मास, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ जिनको, बहुत महान मास है। तो ऐसा उन्होंने मदर मेधावी माता जी को उन्होंने दुर्वासा मुनि ने इंस्ट्रक्शंस दिए इस तरह से। आपको कुछ अगर आपका कुछ प्रश्न है पुरुषोत्तम मास के बारे में तो आप माता जी को लाइव चैट पे पूछ सकते हैं, तो आप लोग अपने प्रश्न यहाँ पे भेज सकते हैं। यस माता जी। How much time do we have more actually? माता जी 7 minutes more. 7 minutes more. So what should we cover? Actually, storm comes. Okay, 1 second. सुषमा अग्रवाल माता जी लिखते हैं मैथ 4,80,000 टाइम्स इन 30 days। तो इतना सारा हमको फायदा मिलेगा तो कौन नहीं करेगा। गंगा जी पास हमें करना एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। माता जी has written the math 4,80,000 times 30 baths. Krishna Agarwal Mata ji has written. Good math. Yes. Good math. Yeah. सुषमा अग्रवाल माता जी कह रहे थे परफेक्ट मैथ की आपने। Yeah. Yes. And then she told, Medavi told to Durvasa, rather than like accepting the good advice of Durvasa, she became angry and started criticizing Durvasa Muni. Oh, great sage, you are exaggerating. How could this extra mass, which is so called Mala mass or stool mass,
be superior to other great months like Magha, Kartik, and Vaishakha. I cannot believe your words. You are trying to cheat me. This extra month is Okay. known to be most abominable for any kind of pious activity. That's what she told द्रौपदी मेधावी माताजी told, हाँ. to So Durvasa मेधा, Muni. In his turn, Durvasa Muni now became very angry, and his whole body started burning, like in this anger. Anger was bubbling in him, and he told here, okay, I will not accept your blasphemy of me. It will not insult me because I see your pitiful condition, but हाँ. I can and should not tolerate your offense toward Purushottam months. In your next life, you will certainly reap the results of your offensive words. And then Durvasa left here. Oh. And what happened? Like Madhavi became very afraid what would happen to me now, and she started worshiping Shiva, Lord Shiva, for 9,000 years. 9,000. And Okay, I'll just translate this one. तो माता जी कह रहे हैं कि जब द्रौपदी माता जी को उन्होंने बोला, दुर्वासा मुनि ने पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में, तो वो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मल मास है उसकी इतनी अगाध महिमा हो सकती है कि वैशाख जैसे कार्तिक जैसे महीनों से भी ज्यादा महिमा मंडित कैसे हो सकता है कार्तिक ये मल मास. आप जरूर मुझसे छल कर रहे हैं. और उन्होंने द्रौपदी जो मेधावी माता जी थी पिछले में, द्रौपदी जी लास्ट पिछले जन्म में मेधावी माता जी थी, उन्होंने कहा कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि ये जो मल मास है इतना ज्यादा महान हो सकता है, बाकी महीनों से ज्यादा हो सकता है. ये आप मुझसे छल कर रहे हैं. तो तब उन्होंने दुर्वासा मुनि के एकदम इतना उनको क्रोध आया, उनके पूरे बदन कांपने लगा, एकदम उनकी आंखें लाल हो गई. और उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमने जो मेरा अपमान किया है ये कह के कि मैं छल कर रहा हूँ, तो ये मैं सहन कर लूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी हालत कितनी दुखदायी हालत में तुम हो. तो मैं तुम्हारा अपराध नहीं लूंगा, अपने प्रति तुम्हारा अपराध नहीं लूंगा, कि तुमने जो अपराध पुरुषोत्तम मास के प्रति किया है, जो अपराध, वो अपराध मुझे सहन नहीं करना चाहिए. और तुम जरूर इस अपराध का जो फल है वो अपने अगले जन्म में भुगतोगे, कमिंग जन्म में भुगतोगे. ये कह के वहां से चले गए वो क्रोधित होकर. उसके बाद तो एकदम भयभीत हो गई. जो मेधावी माता जी थी वो बहुत भयभीत हो गई. वो एकदम डर के उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या की. 9,000 साल तक शिव जी की तपस्या की. हमारे 9,000 years ना, you said? yeah, 9,000 years. And Okay, finally, Lord Shiva became very pleased with her. She came to her, actually. She appeared in front of her and asked her what you want, actually, how I can serve you. And then we know the story. She asked him 5 times, I want a husband, I want a husband, I want a husband, like this 5 times. And Lord Shiva just smiled and said here, be so. Let it. Mataji, I could not hear. I cannot hear you now. There's a distraction. Hare Krishna. Mataji, are you there? Be so, and your next life you will have 5. Haribol? Yeah. Yes, I could not hear Mataji. There was a disturbance on audio. Did you say that Shivji said that you will have 5 husbands because she told 5 times, I want a husband, I want a husband, 5 times? Did you say that? Yes. 5 okay, times. okay. Yeah. Okay. Okay, Mataji. So, Mataji, okay, Mataji, please continue. ओके. सो माता जी बोल रहे हैं कि जब शिव जी का उन्होंने बहुत अच्छे से तपस्या की शिव जी की खुशी के लिए, तो शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हुए. शिव जी मेधावी माता जी के सामने प्रकट हुए. और जब उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे एक हस्बैंड चाहिए, मुझे एक हस्बैंड चाहिए, मुझे एक हस्बैंड चाहिए, मुझे एक हस्बैंड चाहिए, मुझे एक हस्बैंड चाहिए. 5 बार बोला. तो शिव जी ने कहा ओके, तुम्हारे 5 हस्बैंड हो गए अगले जन्म में. तो इसीलिए द्रौपदी माता जी के 5 हस्बैंड्स है, क्योंकि उन्होंने 5 टाइम्स नर्वसनेस में उन्होंने 5 बार बोल दिया. यस माता जी. Then she got very afraid of her fate in his next life, in her next life, and she told him, "Oh Lord, it's most abominable for a girl to have 5 husbands. Please retract your words."
But then Lord Shiva told her very gravely, that's impossible for me, because you ask and I give, I grant it. So because previously you offended Purushottam months by not following the kind advice of sage Durvasa, now you will get 5 your husbands. As Oh, a because of that result. she got 5. Oh, so because of that she got 5 husbands. That's that. Yeah, because she asked first of all, हाँ. like what's the situation, she asked, then he gives, but he explained why, because she offended the Purushottam months. The 5 husbands will be given to her in her next life, and this whole combination will come to the Kurukshetra war and her insult by Dushasana. And Krishna told Arjuna, because Madhavi blasphemed the Purushottam months in her previous life, she was insulted by Dushasana in front of the whole Kuru assembly, in the presence of all her Pandava. That was the result. So two results. She got 5 husbands, and then she was insulted by Dushasana in the assembly. That, फिर क्या हुआ तो फिर उन्होंने जब शिव जी को प्रार्थना की, जब 5 बार बोला कि मुझे एक हस्बैंड चाहिए, मुझे एक पति चाहिए, तो 5 बार बोला, तो उन्होंने शिव जी ने कहा ठीक है तुम्हारे 5 पति होंगे अगले जन्म में। तो एकदम डर गए कि मेरे 5 पति, ये तो बहुत ही निंदनीय है एक स्त्री के लिए 5 पति होना, आप प्लीज कृपा करके अपने जो शब्द है वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, मैं अपने जो मैंने बोल दिया मैं वापस नहीं ले सकता। और फिर शिव जी ने कारण बताया कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने 5 बार बोला, ऐसा क्यों एक विधि का विधान हो गया। वो बोल रहे कि तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी, दुर्वासा मुनि तुमको इतनी अच्छी एडवाइस दी, वो तुमने नहीं सुनी, उनके जो अच्छे वचन नहीं सुने तुमने, तो इसके कारण तुम्हारे 5 पति होंगे अगले जन्म में। और उसके बाद में शिव जी चले गए। तो इसका मतलब कि उन्होंने जो अपराध किया था उसके शिव जी भी उसको काटने, उन्होंने जो फल भी दिया उसमें भी वो पुरुषोत्तम मास का जो अपराध का वो शेड आ गया। तो उसके बाद में फिर कृष्ण बोल रहे हैं पांडवस को कि उस समय द्रौपदी ने जो पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, उस वजह से दुशासन ने उनको भरी सभा में अपमान किया। वो जो कर्म, वो जो फल था पुरुषोत्तम मास का अपमान करने का, उसके कारण द्रौपदी को दुशासन ने अपमान किया भरी सभा में, और उनके 5 हस्बैंड हुए। दोनों का रीजन है उनके पुरुषोत्तम मास के इंसल्ट करना। But because she remembered me, Lord Krishna, and took shelter in me, forgiving her offenses, I protected her from that most abominable condition and saved her from the hands of Dushasana. तो भगवान बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय उनको जो फल मिल रहा था उनके कारण, उनके अपने ही कारण मिल रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे स्मरण किया उस समय, तो मैंने उनके सारे अपराधों को भूल के उनको उनका प्रोटेक्शन किया, उनको मैंने सहायता की, उनको मैंने सहायता की सही वक्त पर, क्योंकि उन्होंने मुझे स्मरण किया, नहीं तो उनके अपराध के कारण ही उनको ये मिला था। माताजी, आई थिंक वी ऑलरेडी 1 or 3. हाँ, yes माताजी। Yeah. Yes, Mataji, we can maybe stretch. We have only one question. So maybe 2-3 minutes more you can speak. You are speaking something, you can complete that. At least you are saying something, you can complete that, Mataji, please. Mataji, again I cannot hear you. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Can you hear me? Hare Krishna. हरे कृष्ण। माता जी भी आएंगे, आप लोग के प्रश्न है वो रिप्लाई करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वो उनका थोड़ा नेटवर्क, वहां पे थोड़ा सा बारिश आ रही है तो इसलिए नेटवर्क इश्यूज हैं। Yes, Shilagati. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Please continue. We have 3-4 questions, Mataji. I was saying, so maybe you can complete what you are saying, and then we can take the questions because. Yeah. Just last portion, and then yes, at the end, Lord Krishna suggested to Maharaja Yudhishthira and all the Pandavas to observe the upcoming Purushottam months, and then he told them that by observing the Purushottam months, you will get back whatever you lost in this game. So you will get
back everything, and finally you will return back home, back to God. So that was the final conclusion of Lord Krishna of the story. That's Okay. final. ओके तो माता जी कह रहे हैं कि फिर कृष्ण ने जब ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि अभी अगर तुम पुरुषोत्तम मास करोगे, आने वाला पुरुषोत्तम मास करोगे, तो तुम लोगों का जो भी तुम्हारे साथ दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुमने जो खोया है तुम्हारा वो सब तुम पा जाओगे वापस से, तो तुम लोग अच्छे से पुरुषोत्तम मास करना। तो ये कहा। तो माता जी अभी समय, एक्चुअली माता जी का कहने के लिए बहुत कुछ है, हमारा समय अभी खत्म हो चुका है, लेकिन जो प्रश्न है प्रभु जी, यू कैन प्लीज पोस्ट वन क्वेश्चन दैट इज देयर, हाउ टू ऑब्जर्व दिस मंथ, so people, devotees can benefit. Mataji, there was a small question of, okay, okay, Mataji, how to, okay, there's one question, I'll read that. Purushottam month, what are the rules to follow in Purushottam month? Yes, we are coming to this, like how to observe the Purushottam months. That's Yes. also coming from different sources. We just collected everything. So first, base daily before sunrise is the best in some holy place, like at least once or at least 3 times in a month or daily. Like before sunrise is the best, but if it's not possible, then under the midday sun. It's 2 options. But actually, any time is good to take bath in the holy place during this. Okay. The best is before sunrise, and then the second option. But finally, the time, whatever you choose, it will be a good time. Okay. So first option was before sunrise, second was in the mid-afternoon at 12 o'clock. The second option, Mataji? Second And option? then, second No, I am option, asking. under the midday sun, 12 Okay. o'clock, 12 noon. There are 2 options. Okay. तो पहला नियम, जैसे माता जी ने पूछा है, पहला नियम है कि हमें सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना है किसी पवित्र नदी में, या फिर दोपहर को जब सूर्य हमारे एकदम सर पे हो, एकदम दोपहर की जो धूप हो, उस समय हमें स्नान करना है। दो ऑप्शंस है स्नान करने के। It's actually rather the perspective of smartas, but for the devotees, they should know that the best is the before sunrise, but if not, then whatever time they choose, it will be okay. And then, rise at Brahma Muhurta, the 1.5 hour before sunrise. It's also should be done daily. Rise at Brahma तो Muhurta. हमें सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, उठना है और फिर स्नान करना है। And then jump out of bed chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It also should be like immediately we have to remember the Lord, Purushottam, the first words which are coming from our from our mouths when we rise up, when we walk up, it should be Hare Krishna, welcoming the Lord Purushottam. पहला नींद से उठने के टाइम पहले ही एकदम कूद के जोर से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। नींद से उठने पहला जो शब्द है मुझसे निकलेगा वो हरे कृष्ण महामंत्र का निकलेगा। Yeah, and then chant the Hare Krishna Mahamantra at prescribed time and meditate on Radha Krishna's beautiful divine forms, qualities, and ecstatic pastimes, purifying the heart. We should chant some extra rounds for this month, like either 24, should be 32, 64, or whatever to your capacity, but you have to increase. Add something to your normal number of rounds, whatever you chant during the day, it should be plus with some number should be, but here it's 24, 32, 64, like this. Okay.
So माता जी कह रहे हैं कि हम ज्यादा जप करेंगे, 16 माला रोज करते हैं, 24, 32, 64 ऐसे ज्यादा माला करने की कोशिश करेंगे रोज के माला से, और भगवान के राधा कृष्ण के जो रूप है उस पर ध्यान करेंगे, भगवान का दर्शन पे ध्यान करेंगे, और भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनका स्मरण करना है हमें. Yes, Mata. And then daily offer puja or at least a ghee lamp to the Vishnu form of the deities, like Radha Vishnu form, Krishna, Radha Gaura, Krishna. Okay. yeah, like this. So Offer रोज daily puja, or at least a ghee lamp. It should be offered. The ghee lamp is also the must. That's what Krishna told. This is yes. also based. Yeah. तो भगवान को रोज पूजा करनी, और कम से कम आवश्यक, अति आवश्यक है कि भगवान को रोज एक घी का दीपक दिखाया जाए. राधा कृष्णा के जो विग्रह है उनको, या फिर गोनिताई के विग्रह को रोज एक घी का दीपक दिखाना है हमें रोज. यस माता जी. And during these months, there will be two most powerful Ekadashi. And if we can follow them perfectly, like if it's possible without even water, like we do for निर्जला. Nirjala Ekadashi, it's the best. If not, then whatever you can, just just fruits or just juices or something, or even eating once. But the best way, because they're most powerful, it's like it gives us merit, like these two Ekadashis during the Purushottam months. And for this Ekadashi, we should do more something, like they asked to offer 33 lamps for this Ekadashi. Okay, both the Ekadashis 33 lamps. Yeah, okay. yeah. ओके. तो माता जी ने कहा कि ये जो पुरुषोत्तम मास में जो दो एकादशी आएंगी, दो एकादशी में वो बहुत ही ज्यादा अति पावरफुल एकादशी है, जो हमें बहुत ज्यादा कृपा हमें मिल सकती है, भगवान की भक्ति को मिल सकती है अच्छे से. तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम निर्जला उपवास करें, दोनों एकादशियों को जितना हो सके अच्छे से पालन कर निर्जला उपवास करें, कोशिश करें. फिर नहीं होगा तो ठीक है, कम से कम एटलीस्ट दिन में एक बार ही अनुकल्प प्रसाद, वो जो प्रसाद होता है एकादशी प्रसाद लें, ज्यादा ना खाएं. बेस्ट निर्जला एकादशी करना ही बेस्ट रहेगा, दो एकादशी. और फिर भगवान को 33 घी के दिए हर एकादशी में ऑफर करेंगे. 33 दिया, घी लैम्प 33 दिया ऑफर करना है भगवान को प्रत्येक एकादशी में. And then we have to do daily arati and parikrama around Tulsi Devi, and then the same daily do Mandira Parikrama, like 4 times, circumambulate our temple or whatever shrine the devotees they have in their houses. They should circumambulate it like 4 times, or the temple. And daily offer Radha Krishna deities or pictures or Gornitai or Jagannath roses, lotus flower, and 100,000 tulsi leaf, or as many as you can. So it's also, yeah. So हमें फिर डेली भगवान को मंदिर तुलसी महानी की आरती करनी है, परिक्रमा करना है, मंदिर का परिक्रमा करना है, और फिर भगवान को डेली जितना हो सके, वैसे तो 1 लाख रोने का 1 लाख तुलसी देनी है भगवान को, अगर नहीं होगा जितना हो सके उतनी तुलसी भगवान को अर्पित करनी है इस मंथ में. Yes, Mata. And then daily read Srimad-Bhagavatam, especially chapter 14 of 10th canto. It's 10th canto, okay. 10th canto. It's called Brahma Stuti, or Prayers of Lord Brahma. Okay. So श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ना है, और स्पेशली दसम स्कंद का 14 नंबर चैप्टर है, 14 नंबर चैप्टर, वो पढ़ना है डेली. हमें ब्रह्मा जी की स्तुति हमें डेली पढ़नी पुरुषोत्तम मास में, ये जो भागवतम का दसम स्कंद का 14 नंबर चैप्टर. And then also to hear Krishna Katha like daily. If you have some groups of your sangha, it's good to perform this Purushottam month's Vrata together in this sangha. That's what we will be doing in our sangha. We will have daily meetings, and like for 1 hour we will read
we will do different ashtakas or bhajans. We will come to this, and we will do some katha also. We will do this Brahma Stuti from 14th chapter of 10th canto. It can be done together in one group. That will be more pleasing to Krishna even. If, like now we have this meeting with you, with the devotees, the same way in Zoom, you can gather together and do something together, like in one group, like for 1 hour, but it will be vrata for everyone. And during this, you can read, you can chant prayers together. Yeah. So तो katha माता should be there. Yeah. कथा शुरू तो Daily माता जी कह katha रहे हैं कि आप लोग अपना ग्रुप बना के ग्रुप में करने से भगवान का ज्यादा खुशी प्रसन्न कर सकते हैं हम तो ग्रुप में सब साथ में जप कर सकते हैं भगवान की स्तुतियां जो विभिन्न भिन्न प्रेयर्स है वो बोल सकते हैं और भगवान की जो कथाएं हैं वो डिस्कस कर सकते हैं आपस में ये एक तरह का व्रता होगा कि हम सब मिलकर 1 घंटा दिन में अगर ग्रुप बनाएंगे अपने भक्त लोग तो उस 1 घंटे में हम मिलकर ये साधना कर सकते हैं जो कि भगवान को बहुत ही पसंद करेगी And then daily chant Shri Jagannath Ashtaka, because that's Purushottam month, and Jagannath, that's Purushottam, right? Jagannath Ashtakam also is prescribed Ashtakam to chant. And then different Ashtakas glorifying Radha and Krishna, like Radha Krishna Yugala Milan, and then different prayers like also Radha Kripa Kataksha Stavaraja or Nanda Nandana Ashtaka and Chora Grahanya Purushashtaka. Chora Grahanya Purushashtaka, that's also Ashtaka. Yeah, for this month, because it described the wonderful, playful nature of our Purushottam, Shri Krishna. तो माता जी ने जो हमें अभी अष्टकम के बारे में कहा या चौरा अष्टकम और बहुत सारे अष्टकम के बारे में कहा आप समझ गए होंगे उन सब अष्टकम को जैसे स्पेशली जगन्नाथ अष्टकम और जो माता जी ने अष्टकम कहे उन अष्टकम को अगर हम प्रे करेंगे भजन करेंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाले अष्टकम हम ये हैं और हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा You take a vow to remain peaceful and truthful. और हमें शांत और सत्य बोलना है ट्रूथफुल रहना है सत्यवादी होकर रहना है 1 मंथ और पीसफुल शांत रहना है गुस्सा नहीं करना कोशिश करनी है No any kind of critics. किसी की निंदा नहीं करनी है Yeah, to be careful to not blaspheme any devotee, brahmana, saints, cows, shastras, especially anyone who observe Purushottam months. किसी की निंदा नहीं करनी है स्पेशली जो पुरुषोत्तम मास करते हैं उनकी तो बिल्कुल निंदा नहीं करनी है चाहे वो काव हो ब्राह्मण हो वैष्णव हो किसी की भी निंदा नहीं करनी है पुरुषोत्तम मास में शांत रहना है शांति से व्रत करना है अपना And be satisfied with whatever you have. This month is especially for not asking anyone for anything, like to give or to get. Be satisfied with whatever you have. And don't do any endeavor to acquire any material things during this month. Like go for shopping, get something. Like whatever you need, it should be there, but something extra should be postponed to some other time. So, time. Not to waste time in that way. Not to waste time and not to get material things. Whatever is not needed for observing Purushottam. Whatever we have to avoid this thing. Whatever is not conducive for observing, we should not get. तो माता जी ने कहा कि जो भी जैसे इस महीने में हमें किसी से कोई डिमांड नहीं करनी है कि हमें ये दीजिए वो दीजिए जो है जो पुरुषोत्तम मास के लिए जरूरी है जो हमारे व्रत के लिए जरूरी है उन सामानों पे ही फोकस करना है शॉपिंग में नहीं जाना है एक्स्ट्रा कुछ सामान मटेरियलिस्टिक चीजें घर पे लेके नहीं आनी है बस जो चीजें हमारे जो व्रत है पुरुषोत्तम मास के लिए भक्ति के लिए अनुकूल है उन्हीं पे फोकस करना है और बाकी जो प्रतिकूल है जो नहीं चाहिए जिसके बिना चल सकते उस पर इतना फोकस नहीं करना है या तो पहले कर लीजिए जो खरीदना शॉपिंग या बाद में कीजिए उस महीने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना और मटेरियल कुछ चीजें लानी नहीं उस पर इतना मेडिटेशन नहीं करना उन चीजों पे यश माता जी
Yeah, like Bhaktivinoda Thakur wrote nice article about this, and he says that there are three types of devotees. Like, and the last one is Nirapeksha, who is thoroughly observed. Like, first devotee, materialistic. Uh, he can do whatever out of Mhm. whatever is listened, whatever is in the list of the different ways to observe the months. Uh, the second one is not materialistic anymore, but he puts the deity like in the center of his activity and try to please the deity during this Purushottam months. And third one, or Nirapeksha, the devotee, he doesn't have anything to do with material world. So Bhaktivinoda Thakur actually asked us to become Nirapeksha at least for this Purushottam months, 24 hours. That's what he asked. 24 hours just to be observed in pleasing the Lord by some devotional activities, by like this. And also should be some restriction in our diet. We can come to this also. सो माता जी कह रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर पाद ने कहा है कि 3 तरह के भक्त हैं जो व्रत करते हैं ये पुरुषोत्तम मास का। पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि जो लोग बिल्कुल भौतिकवादी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो, तो उनको वो है। सेकंड कैटेगरी जो भौतिकवादी नहीं है, जो लेकिन उनकी है, लाइफ चल रही है, भौतिक लाइफ भी चल रही है, कि भगवान को, विग्रह को केंद्र रख के वो जीवन यापन कर रहे हैं। और तीसरा जो कि पूरा निरपेक्ष है, जिनको अपने भौतिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भगवान की भक्ति में 24 घंटा लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम इस माह के लिए हमें निरपेक्षा लेवल पे आने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सिर्फ हम 24 घंटे भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, ताकि एक भी मिनट वेस्ट ना हो हमारा कम से कम। Mataji, I just asked Prabhuji if we can borrow some more time, a few more, because we already got 22 minutes above time. We have another show just after this. So I'll just, can we, Mataji, wind up in one minute? I know, I mean, I also want to hear, but then there's another show starting after our show, which is a quiz show. And I have taken 22 minutes extra today, a lot of time extra today. But then I continued because it will benefit the devotees greatly. Because if they observe such a glorious month, then maybe I'll also get some blessings, and of course you will also get. So I was thinking, I was trying to be greedy, but then there's another show coming up, so we'll have to wind up, Mataji, in just maybe 1 minute or so. Yeah, and then charity, there should be some special rules for breaking Purushottam. Actually, Purushottam is like Kartika Vrata. It's very similar. All the rules for observance of Purushottam are very similar to observance of Kartika Vratas. So devotees know how to break the 5 most powerful days at the end of Purushottam. It also should be more extra of the activities, devotional activities, because these 5 last days, like a Bhishma Panchika during Kartik, 5 last days of Kartik, very important, right? We do like special something Yes, extra. special concept. Yes. Whatever they cannot do during the whole month, they can do this 5 days concentrated form, like taking baths daily, like rising up before Brahma Muhurta, and then chanting more, like even more than they took vow for the whole month, these 5 days, like something more extra should be done. And also in our diet, we can eat according like three levels of taking our meal during these months. It can be, first of all, once a day. It can be like twice a day by just fruits. And the third, it could be Havishya. Havishya, we know Havishya, right? Only Havishya boiled. is it's rice with
few vegetables, literally speaking, with little salt and little ghee. That's So how. once in a day, that Havishya once in a day. Yeah, once in a day, but it's according to your capacity. But some restrictions should be there out of what we mentioned, like Okay. whatever they can, really. So The first is best, Havishya. yeah, Best is? Yes, Mataji, best is? yeah, You are best saying. is just plain Havishya. If they cannot do once a day, twice a day, but it should be regulated. Okay. The best is once, if not, then twice, but they have to stop it at least twice. Twice is the Okay. best for Havishya. Or, सो इस महीने में जैसे डाइट के लिए माता जी कह रहे हैं कि हविष्य मतलब बेस्ट जो है जितना जैसे देखिए जैसे एकादशी में भी हम लोग को बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स हैं। तो पहले माता जी ने कहा कि जैसे कार्तिक मंथ में लास्ट 5 डेज विश्व पंचक में बहुत ज्यादा हम लोग तीव्र भक्ति करते हैं तो बहुत हमें लाभ होता है। उस तरह से ही अधिक मास में अगर लास्ट जो 5 दिन है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे। जो लोग रोज गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट लास्ट के 5 दिन गंगा स्नान कीजिए, सुबह भवन मुहूर्त के पहले उठ जाइए, स्नान कीजिए, भगवान की बहुत ज्यादा से ज्यादा भक्ति कीजिए, एटलीस्ट और ज्यादा करना चाहिए लास्ट 5 डेज। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे आहार के बारे में जो बेस्ट है हविष्य लेना। हविष्य मतलब अन्न, मतलब राइस में कुछ सब्जियां डाल के फिर थोड़ा सा नमक और घी, फुल स्टॉप। राइस में नमक, सब कुछ सब्जियां और घी डाल के उसको बॉईल करके एक बार में बॉईल करके दिन में एक बार लेना है वो जो प्रसाद है। और अगर नहीं होगा एक बार तो 2 बार लीजिए, लेकिन रेगुलेटेड, ऐसा नहीं कि बहुत बार ले रहे हैं, ऐसा नहीं। रेगुलर कुछ डाइट पे रेगुलेशन होना जरूरी है। Yes, and Mataji. also we have two mantras, special mantras, which should be added to whatever they chant during during this month, every day, like 2 more mantras. Vande Navakana Gana Dvibhuja Muralidaram Pitambaram Dharam Devam Saradam Purushottamam. I Okay, offer this my obeisances, yeah, Yes, to Mataji. Nava Ganashyam, Krishna, who has the color of a fresh rain cloud, who is holding the flute with his 2 hands. I worship Purushottama, who is so beautiful, and his yellow dress, Pitambara. Once more. Vande Navaganashyama Dvibhuja Muralidhara. I worship Navaganashyama, who is like a newly formed rain cloud. Dvibhuja Muralidhara, who holds in his 2 hands Murali. Pitambara Dharam Devam, who wears Pitambara, a very beautiful yellow dress. Saradham Purushottama, and who is there in Vrindavan with Radha. I worship this Purushottama. That's the first mantra, and it should be added to your daily prayers. And the second mantra, this mantra of Kaundinya Muni, and should be chanted 12 times or more. Gopardhanadaram Vande Gopalam Goparupinam Gokulotsava Ishanam Govindam Gopika Priyam. I can send if the devotees Yes, don't Mataji, have please this. do send. Then it will be good. Both the mantras if you can send. So Mataji बोल रहे हैं कि 2 मंत्रा जो है स्पेशली पुरुषोत्तम मास में हमें प्रेयर्स करना है। दोनों मंत्र माताजी ने कह के बोला है और माताजी बोल रहे हैं दोनों मंत्रा मैं आपको भेज दूंगी, तो मुझे भेजेंगे तो मुझे यूट्यूब का लिंक होगा इस साधना टॉक का, उस लिंक में डिस्क्रिप्शन में अमिताभ प्रभु जी डाल देंगे, तो आप लोग वहां से कॉपी करके याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पुरुषोत्तम मास में बोल सकते हैं इस मंत्र को। और जो सेकंड मंत्र है वो शायद माताजी हाउ मेनी टाइम्स दे विल से द सेकंड मंत्र? 22 टाइम्स। Yeah, like 12 times and more. सेकंड मंत्र है 12 बार बोलना है, फर्स्ट मंत्र जैसे एक बार कम से कम बोलना है आपको। यस माताजी। I worship the lifter of Govardhana hill, who has the beautiful form of a cowhead boy and who continually plays with the gopas. He is the Lord of Gokula. हरे कृष्णा, हम लोग का नेटवर्क चला गया है
So, okay, Mataji, I could not hear you in middle, but okay, you send me the translation of the mantra, Mataji, please. So I will put them in the description of the video, YouTube video. Then devotees who are listening to this later on also, they can take from there and write in their copy and they can do the mantra chanting. Yeah. If the devotees needs, I also can send the performance, like all the rules and Yes, regulation, Mataji, whatever. please do send. We will put on our Facebook page and devotees can go and check there. It will be very beneficial, Mataji. Thank you, Yeah. Mataji, for your time. I took a lot of your time today. And thank you so much for coming to our show and giving us all instructions how to perform the Purushottam month. I'm sure devotees will benefit a lot and they'll observe this. Please accept my most humble obeisances, Mataji, at your lotus feet. Please accept mine to your lotus feet. Actually, thank you for inviting and thank you for your service. It's kind of very inspirational to see how you like able, so capable to grasp the essence and like in big pieces. You remember everything and then Oh, you speak it's it my out. Mataji. Letting it. It's very precious. Krishna gave you the special ability to do this service like this, especially with Thank you, translation. Mataji. All goes to Srila Prabhupada because of his I am blessings. really amazed at your performance of translation because I translate sometimes, so I know what it takes actually. Good translation. So thank you. Thank you, Mataji. Please bless all of us, Mataji, so we can observe. Please pray for us at Mayapur Dham. Thank you, Mataji. Thank you to Dandat all the Pranam. devotees for this opportunity to do something and see during Purushottam months this wonderful observation to please Krishna and Srila Prabhupada. All the Hari Bol. best for your Purushottam months. Hare Krishna. Hare Hari Krishna. Bol. Hari Bol. Thank you. Dandat Pranam sabhi ko. Hare Krishna. Hare Krishna.